Welcome to another open discussion of ours, which is one of the most interesting, intriguing, and exciting topics which I find. And um, maybe the word that the terminology that we are going to discuss today, which is spiritual bypassing. And I don't know how many people are aware of this kind of terminology here, but what I can say from my experience that not many of us are aware about this thing happening, and this is more common than we think, right? And there are times when this kind of spiritual bypassing can actually be dangerous, and it can hamper our growth on the journey of healing ourselves, evolving, and anything we call it, right? So we are going to talk about that today. I guess a few new people have joined us today. So, how these open discussions go is that it's not like we are going to deliver something to you. So, yes, I'll be giving a brief about this topic, but this session is more about having a conversation. So, we would like you all to participate, converse, and you can ask your question or share your experience or anything that comes along with the topic. So that's that about today's topic and these open discussions. Now, what is spiritual bypassing, right? So, this term spiritual bypassing pertains that whenever we use these spiritual tools, techniques, actions, practices, and all of so many stuffs that goes around to escape, avoid, resist, reject, um, defend, or completely suppress our wounds, our emotional pain, our trauma, our uncomfortable, real, supposedly, negative emotions, and all of these, things which we call negative, whichever are there inside us, and to suppress all of these things when we use these spiritual practices to just avoid seeing or all of these things. It's spiritual bypassing. And the idea of spiritual bypassing in simple terms is just escaping the discomfort, avoiding pain, in the same way like somebody can watch television to distract themselves. There are many of us who use these meditation practices and visualization and X and Y and Z and so many different things, um, when it comes to escaping our emotional wounds. And we the whole idea is just to escape what's uncomfortable and go towards what sounds more like beautiful, love, light, and all sorts of those kind of things. One of the most common things which we observe in the personal growth, spiritual or healing community is um, toxic positivity that goes on. So I would like to share this with one of the stories which I was looking at some time back. So there's a friend of mine, and there was this girl he was seeing, right? And they were enjoying each other companies, drinking, partying, and everything, having fun together. And every time this guy would bring up what has happened in his life, or maybe the struggles he's going through, the kind of pain he is going through because of his business or family or X or YZ, this girl would start telling him, stay positive, be happy, you don't have to feel this way. You're thinking very negative, this is wrong, this is bad, and blah 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 blah. So she was all about this love and light and think positive, you always have to be positive, you can never be negative, and so on and so forth. And when I was conversing with this guy friend of mine, he was so fed up with this behavior, which was happening again and again with this girl.
And then he was like, oh God, it's like too much. I mean, I understand this positivity and everything, but it's like too much, right? Because what happens when, somebody is sharing what they feel, what's going on inside them. So I'm not talking about people playing the victim and venting out and emotionally dumping on you, but there are times when people are genuinely simply being vulnerable and they want to share a part of themselves, maybe a painful part only, with somebody else. But when somebody as an answer provides an advice like these things, that think positive, stay positive, be positive, so what ends up happening to the person who is at the receiving end is that they feel shameful, right? They feel that they are doing something wrong. They are not intelligent enough to understand all of these things. Their emotions are bad. So, in case they are angry or frustrated or they are going through some troublesome emotions, those emotions are bad. And somehow they are supposed to, be happy and be blissful and joyful and enjoy all the time, right? So that creates a lot of shame for the person in receiving end, right? And every time, so there was somebody in the call, maybe 4 or 5 calls ago, and he was so giving positive and motivational, sharing thoughts and so much of it, right? And at that point of time, I really wanted to ask the participants who were at the receiving end, who were going through some trauma and sharing it, that how much is this helping you? I don't know. I couldn't ask it that day, but as far as I understand with the experience that I've had, that's not useful. That shames the other person. So that goes on too often. We get into the advising mode too soon, too fast, without even, listening or understanding to people, right? And we are like, oh, get over this situation. And this girl, which was dealing this way with my guy friend, um, this girl actually had a history of trauma and wounds, which was not healed in her case, and it was kind of like really visible on the surface. The moment something uncomfortable would come up, she would just try to run away and just make it positive, right? So uh, every time somebody else also comes and talks to her about emotions and all of these stuffs, she starts feeling it in her body, right? And she starts getting triggered and remembering that the things that have happened with her, and she would just tell the other person that be positive, stay positive, right? So that's how it happens, and this happens way too often than we think, right? So that's one thing. Another thing that happens as a part of spiritual bypassing is we go into extremes. When we go into extremes, when people start using the term detachment for the disconnection that they feel. So basically, the thing is that there are many a times people actually feel very, very disconnected with themselves, and thus disconnected with other people. They don't have the capacity to feel that connection. And and how do they bypass this in a spiritual way? So the detachment word is very much commonly used in the spiritual community. So what they end up doing it, they end up saying that I am detached, right? Nothing touches me. Nothing, oh my God, I am out of all of these things. I'm so detached. No, no. That's not what detachment is. They are just covering up the mask of their disconnection in the name of detachment. That's not what detachment means at all, right? So that's another thing which I have observed. Another kind of spiritual bypassing that we observe in the community is the spiritual how should I say, ego people. So they think, oh my God, I know everything. I have done all the work in the world, and now I have reached the place and I have understood everything. So if you are doing something bad with me, it's your problem. While
in reality, if somebody is getting triggered, somebody is having these painful emotions, oh my God, coming up on the surface, it's never about the other person, right? So we wear this mask of love and light and goodness and joy and peace and all of these things while rejecting our painful emotions. And we say that, when something goes wrong with us, it's the other person's problem. But that's not how it works. The another kind of spiritual bypasses that we see are the people who have studied law of attraction. So law of attraction is amazing. It's nothing but just a universal law, but people use it and mold it according to their own advantage. And like we were talking about the this toxic positivity, in the same way, let's suppose you're going through a traumatic experience, somebody comes and tells you, according to law of attraction, you attract what you feel, you like attracts like. So if you're feeling like this is what you're going to attract. What they're saying is true, right? But it is not the whole truth. How this basically works is a person who is at a negative scale, it's not possible for them to jump to an entirely positive scale right away, right? So for them, they have to go through their own journey. That journey could be of a day, of a month, of an year, depending upon the event. But saying this, that like attracts like, and blah blah blah, it creates more resistance, more avoidance, more problems in this person who's going through these tough emotions and everything. So it creates more trauma rather than doing any help of the other person. And moreover, uh, uh, even if we when we properly study law of attraction and we understand all of these things properly, when it comes to transcending our vibrational scale, going on the higher side of emotional scale, transcendence doesn't mean that if you have reached a higher level, now you never get angry, you never get jealous, you never get sad, you never get depressed, you never get all of these supposedly negative emotions. No, no. Transcending means that you have integrated all of these parts of you, and that's how you go above. You don't have a judgment for your anger, even if today itself, because of some situation, it comes. You don't have a judgment for that. You don't have a judgment for any of these emotions, right? And that's a sustainable level of reaching a higher state of being. If you ignore the negative emotions and try to reach very high state of being of love and joy and blah blah blah, it's just forcing, it's just masking, it's just avoiding, escaping, right? It's not a sustainable level of work. So even if you practice a lot of love and everything, if you have unresolved trauma and wounds which are lying on the surface, you will not be able to sustain that for a very long time, right? And in fact, the more you do that, the bigger and bigger your unresolved trauma is going to be. And the more and more life is going to throw situations at you, which are going to make your trauma bigger. Because what life is trying to tell you is that with this love and light that you're accomplishing, integrate this trauma. Don't continue to reject this trauma. Integrate it into you with this love, right? So that's another kind of spiritual bypassing we see. One more kind of interesting spiritual bypassing we see is that I don't have to do the work, right? There's nothing that I have to do. My guru would do it for me, my teacher would do it for me, my master would do it for me, my X would do, Y would do, spirit guides, spirit animals, crystals, X, Y, Z, falana, dhimkana, a long list. I don't have to do the work. I don't have to face the reality. I don't have to live in the present. I don't have to do any of these things. Somehow, astrologically, magically, and in some way, all of these things are going to, just do the work for me. No. So actually, the thing is that
we talk about any of these things, you are the focal point. Everything else, be it even your guru, be it even your crystal, be it even your teacher, be it even anything XYZ, they are all enhancers, they are all directors, they are all guides, but it's only you and you who walks on the path, right? So that much um, ownership and responsibility we have to take on this journey, right? Another thing that I've seen on this in this community is that people say that I pray and I do the bhajan and I'm into devotion and into bhakti and I pray all the time. So that's good, not a problem. But we really need to check if that bhakti is a blind bhakti. So let's suppose, you sit in front of a lemon tree and you keep praying that, oh God, please, you love me so much, you're such a wonderful God, and please give me mangoes, 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 please give me. No matter for how long you keep praying, if the seed is of the lemon, you are never going to get mango, right? So that's where faith becomes blind faith, right? And people become blind, have this blind faith because they don't want to do this hard work, because this feels hard to take ownership, to take responsibility, to look at yourself, right? And to face it. So what should we do? Okay, let's start chanting this mantra, that mantra. And by sharing all of these things, at no point I'm saying that this chanting is not good, but it's more about, are you doing all of these practices from the space of integrating yourself, looking at yourself, becoming self-aware, and or maybe facing yourself, or you're doing all of these practices to avoid looking at yourself. That's the whole, conundrum when it comes to spiritual bypassing. What else? uh so a lot of times, we tend to use different kinds of drugs. So I don't know if there are people here who are into psychedelics or this and that, but I have so many friends who keep sharing videos with me and stuff like this with me, that if you do DMT or 5-meo or X or Y or Z, or go for an ayahuasca trip, or and so on and so forth, then it's like you can just escape this route and see some I don't know what all. And I again at no point have any inhibition towards any of the plant medicines. I feel that they would be beautiful, but it's more about how people are using it, right? Are you using it to bypass looking at your issues, or are you using them actually as a real spiritual practice? And yeah, another, like we already have talked about the spiritual ego kind of people, but you will find so many people saying that I have done this work, that work, X work, work, Z work, and all of those works, and now I don't need anything. But the moment you talk to them about resolving one of these things, it's like the shield comes up and they're like, I'm done with this, I don't need this, I don't want this, I'm done, right? So these are some of the examples, and which I can remember when it comes to spiritual bypassing. Now, yes, I have spoken too much today. So, and I don't know if I forgotten some or the other categories. Akarma, anything you would like to add to this? No, nothing that comes to my mind right now. To add to this, I think you covered quite a lot. Maybe let's hear from others. What do they think? Great. Anybody wants to say anything? Yes, Palak, go ahead. So, Anamika, I don't actually uh, have to say anything, but I have a question. Like you just gave the example of your friend, and who was whenever sharing their problems, the girl gave her this advice of positivity. So,
like in my life also I have experienced the same situation with a person. So that person is also going through some trauma or something, like some bad situations in his life. And whenever he tried to share it with me many times, and because I am also going through some things and I know how listening to some person without interfering them can help. So I listened to him many times, like whenever we talked about an hour, and in that hour he was just continuously talking about his problems only, always and always. So initially, like for me it was like, okay, I was also sharing my problems, he was also sharing my problems, and then eventually it was like he was the only one who always shares the problem, and nothing comes out of it, and I'm just the person who always listens to it. So my question is like, then after that, it kinds of it really kinds of like didn't want I didn't want to listen to him anymore. Like it was so overwhelming for me that why does he always share his problems only? Doesn't he have anything good to share, or anything, any solution, or any other things that, because I understand that okay, he is going through something, and I supported him the best I could, but I also have a limit. I can't always go through someone else's problem, and even though when I am also struggling with my life and some situations and all, so if you are my friend, I always I support you, but then I also uh, have this expectation, okay, that we have something else to talk about as well. So my question is like, how long should we like go ahead with this? Because now the situation is that I even don't want to talk to him, because I know whenever I want to I talk to him, he will just say the problems only. Like recently he messaged me, and then I was like, okay, how was your day and everything, and he was like, I'm not feeling good inside. And this is just the one liner, and then I was like, okay, I don't want to go further, and I didn't stop. I stopped message him. So what to do in this situation? If I know he shares his problem, because he says to me that you are a good listener, and I always feel light when I says the problems to you, because nobody else around him is so much reliable that he can share his problem too. So I understand that, and I supported him that way. But now the things are like, I cannot bear it always. So what should I do in this case? But this is a very different scenario which you are sharing. So basically, in this case, I would say that this is not sharing vulnerably or have opening up or talking. This is basically simply emotional dumping, right? Okay. So what we call this is emotional dumping. So when, if you, I don't know, I also had a friend who is like kind of like very similar, and every time we would talk, it would be like कि सारा कचरा 2 घंटे 3 घंटे में निकाल के मेरे ऊपर डाल दिया, right? And every Hmm. time you try to start a conversation, it somehow, rolls back and goes to them. Hmm. So it never comes back to you. So in this case, it's, you are not um, so it's not like you are avoiding anything as such, so it's not that way. So the only thing that you need to do is set a boundary, and or maybe that depends how important this connection to you, and clearly communicating that maybe you can try it out sometime, that when you meet him or talk to him, you say that today I want to talk about me. Hmm. I want to simply talk about me. See, whenever you talk, I listen, and I listen for so long. Today, can you please hear me? I need somebody to hear my problems, Hmm. and see what happens then. So, what's the difference between this emotional dumping and the sharing your vulnerabilities, like in the example you have mentioned? How can I differentiate between these two? Okay, so there is, I mean, I cannot say a measurement, but it's like, if somebody, so basically being vulnerable means that, let's suppose I come to you and I share with you how I feel, how my situation is, and we, Just maybe I'll answer this question in a very short way. Palak,
what does vulnerability means to you? तुम्हारे लिए vulnerability और रोना धोना सेम चीज है क्या? No, not at all. नहीं, बट तुम्हारे क्वेश्चन से तो यही लग रहा है. Maybe Honestly because I बताओ don't ना, know. अगर कोई रोना धोना कर Maybe रहा है तो उसको तुम vulnerability बोलती हो? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी अंदर की चीजें शेयर करते हैं तो हम शेयर करते करते रोना आ जाता है, सो दैट इज अ डिफरेंट केस. लेकिन अगर कोई आके जस्ट रोना धोना ड्रामा कर रहा है तो वो वल्नरेबिलिटी नहीं है, वो काइंड ऑफ इमोशनल ड्रेनिंग या टॉर्चर बोल सकती हूँ मैं. उसको हम इमोशनल डंपिंग बोल रहे हैं. हाँ हाँ, तो वही तो हम भी बोल रहे हैं. नहीं तो पर उस केस में वो रोता धोता नहीं है. आई मीन हाउ वुड आई एक्सप्लेन, वो रोना धोना नहीं होता है, वो टोटली जो उसकी नहीं लाइफ तो में हो नहीं रहा कर रहा होता है वो होगा. उसी. हाँ जो हाँ, उसकी वो नहीं लाइफ में कर रहा हो रहा होगा. होता है वो उसी को सिर्फ एक्सप्लेन करता जाता है एंड बिकॉज वो इतनी कोशिश कर रहा है और उसके बाद भी चीजें सॉर्ट नहीं हो रही, तो उसके वो बस उसी चीज को एक्सप्लेन करता जाता है एंड देन ही जस्ट उसी को गो रोना अहेड विद धोना दैट. कहते हैं. उसी उसी को ही को तो रोना रोना धोना धोना कहते कहते हैं. हैं. तो रोना धोने का मतलब सिर्फ लिटरली रोना नहीं होता है ना. अच्छा अच्छा. इट इज, ओके. हाँ, इट इज लाइक कि कोई जस्ट वो बस कंप्लेनिंग मोड में है. हाँ So काइंड, there हाँ is काइंड कह there सकते is हैं. so one person is like one. There is very subtle difference कि एक होता है venting, एक है complaining. Venting is कि मेरी लाइफ में कुछ हो रहा है and I am feeling too overwhelmed by it, और मैं I vent it out and then I move on. तो कभी कभी ओके. ऐसे सिचुएशन बहुत बिल्ड अप हो जाती है. इट्स टू मेनी थिंग्स हैपनिंग, आई जस्ट फील ओवरवेल्म. ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सो यू जस्ट वी फील ओवरवेल्म. ऑल ऑफ अस फील दैट वे एंड वी नीड टू वेंट आउट. इस जैसे स्टीम एक बिल्ड हो गई है और उसको स्टीम को लेट आउट करना है. ये होता है वेंटिंग. और लेकिन एक कोई अगर वो हमेशा ही किए जा रहा है, दे जस्ट कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, लाइक उनका खत्म ही नहीं हो रहा है, उसको वेंटिंग नहीं बोलते, उसको कंप्लेनिंग बोलते. एंड कंप्लेनिंग इज रोना धोना ऑन, एंड डजंट मीन कि वो लिटरली रो रहा है. The अच्छा person ओके. is just in the complaining mode only, na. And complaining and rona dhona is not vulnerability. Okay, okay. So then in this case, like, how would I suggest him to do what? I mean, how should I move on with this? Like, कि उसको बुरा भी ना लगे, क्योंकि मुझे तो कुछ कहते हुए भी उसको ऐसा लगता है कि अभी इस बात को भी पकड़ के बैठ जाएगा ये. तो बैठ जाने दो, किसी को तो उसको मिरर दिखाना पड़ेगा ना. Okay, okay. एंड हाँ, जिनको आदत छोटा. होती है ये करने की, इमोशनल डंपिंग करने की, उनको जब आप आईना दिखाते हो तो लेट मी टेल यू द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू आर गोइंग टू गेट. दे आर गोइंग टू क्राई अबाउट व्हाट यू सेड इन अ वे कि अच्छा अब तो मैं तुझसे भी नहीं शेयर कर सकता, अच्छा अब तो मैं तो सिर्फ शेयर कर रहा था, तू तो इसको जज कर रही है. दे विल टेक इट एज अ जजमेंट. ठीक है, जैसे कि आपने उनको रोक के उनको जज कर दिया, राइट? और ऑल सॉर्ट्स ऑफ ड्रामा वुड कंटिन्यू टू हैपन. But that's what setting a boundary is, that when you have said it and you have said it and it's done, हो गया. इसमें रूट कॉज एनालिसिस नहीं हो सकता क्या? रूट कॉज एनालिसिस करने से वो सब इमोशनल डंपिंग नहीं हो. वो जो किसका इसका root cause तो analysis? आरसी तो वही बंदा करेगा ना जिसके साथ प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा ना करूंगी. yes yes, वो तो उनकी प्रॉब्लम है. वो मतलब whenever they get aware and they do the work. आप उनके साथ कर सकते हो ब्रेनस्टॉर्मिंग, बट ये तो उसी को इनिशिएट करना होगा ना. लाइक आप हाँ, अगर, true. क्योंकि कुछ लोगों को करना ही नहीं होता, उनको बस यही करना होता है. दे जस्ट वांट टू कंप्लेन. उनको कंप्लेनिंग में ही मजा आता है. दे फाइंड हैप्पीनेस इन इट. सो एक पॉइंट आता है जब हमको ये चीज देखनी होती है कि it is a real thing. It is actually a real thing. There are people who find happiness in sorrow. It is a very real thing. So accept this about people, that there are people who find happiness in sorrow, who find happiness in misery. उनको उसी में ही मजा आता है, उसी के बारे में बात कर करके कि आई एम सो विक्टिमाइज्ड, मैं कितना बेचारा हूँ, मैं कितनी बेचारी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है हमेशा, मेरी ही किस्मत खराब है, मेरा ये है. उनको मजा आता है इसमें. उनसे ये तुमने ले लिया, अगर ये चीज छीन ली तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं है. दे विल फाइट फॉर इट. You try doing root cause analysis with them, you try do anything with them, देखना कितना
कितनी जोर से और पकड़ेंगे वो इस चीज को. Try doing it. Okay. Okay. Yeah, Okay. Thank you. and what Yeah. yeah, and what you shared, Palak, this is not exactly connected to your example, but I want to share another type of spiritual bypassing that happens. So in the spiritual community, there are many people who practice, compassion meditation or metta meditation or, what else can I say? Loving kindness meditation, the different names by which it has called. And they go so deep into practicing compassion for other people and everything. So at no point I have a problem with compassion. But the thing is, कि फिर उनको वो समझ में नहीं आता है that at what point of time they have to set boundaries, at what point of time, और उनको लगता है कि when they set boundary, they have done something wrong, right? Or if they get angry, they have done something wrong. Or if they talk harshly, they have done something wrong. कुछ भी अगर ऐसी situation आती है जिसमें कि they need to take their stand, or talking to a coworker, and they start feeling so guilty, and they start ट्रीटिंग जैसे कि सब्जी बन जाना, आओ मुझे काट लो, मतलब हम खुद जा रहे हैं और सामने वाले को अपने हाथ पैर दे रहे हैं और बोलते हैं अच्छा हमें काट लो अब, राइट? एंड दैट इज व्हाट वी स्टार्ट कॉलिंग कंपैशन. That's not what compassion is, right? So compassion in this case is used to is used to not take stand for yourself, to not set boundaries and all that, because it's uncomfortable. And by that, it doesn't mean that practicing compassion is a wrong thing. But in this case, when people go to this extent and in the wrong direction practicing compassion, the compassion which they are practicing is not the actual compassion, right? In the actual compassion, it includes you maybe even shouting at the other person using harsh words in case it is required. Right. So it's this kind, the real compassion is not devoid of any of these things. So yeah, Okay. that's just मतलब वो नहीं है another. कि हमेशा बस आपको प्यार से ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं है. It's just like to stand up for yourself in any बिल्कुल. possible way, जो भी आप बेटर तरीके से कर सकते हो. बिल्कुल, not just for yourself. मतलब अपने लिए तो स्टैंड अप कर ही रहे हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर सामने वाला ऐसा लग रहा है दैट दे आर in the wrong direction, so not just beating around the bush and talking nicely, just go and communicate to them, have a clear conversation, right? But Okay. yeah. So is this the example of spiritual bypassing as well from his side? Because he also mentioned to me that he wants to focus on his spiritual evolving, and he also does meditation and all. So is it a kind of bypassing? I don't know. For that we'll have to talk to him. अच्छा. नहीं मतलब अगर वो कर रहा होता अपने पे काम, तो वो उसको शायद मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती ना इतना सब पेंट अप करने की. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, या मे बी वो गलत तरीके से कर रहा हो या हो ना रहा. Actually, spiritual bypassing is the opposite of what we are talking about. Spiritual bypassing is when people know all these concepts, and instead of actually looking at their problems, they are whitewashing it with these concepts. ये है spiritual bypassing. कि आपको पता है कि ये चीजें आपको ट्रिगर कर रही हैं, ये चीजें आपको प्रॉब्लम कर रही हैं, लेकिन आपको देखना ही नहीं है. आप वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े जा रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि ये अगर मैं बहुत पॉजिटिविटी अपने अंदर डाल लूं तो मेरी नेगेटिविटी जो है वो चली जाएगी. वो जाती नहीं है कहीं भी उसको बिना एड्रेस किए. दैट इज स्पिरिचुअल बाईपासिंग. इज इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन देयर शैडोज, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन देयर ट्रिगर्स, दे आर यूजिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स टू प्रोजेक्ट एन इमेज कि मेरा तो सब सही है. ओके. ओके. गलत तरीके से करना इज नॉट बाईपासिंग. ओके. गलत तरीके से करना बाईपासिंग नहीं होता. नहीं,
गलत तरीके से करना बाईपासिंग नहीं है, वो तो कर ही नहीं रहे हैं. They have अच्छा, okay. chosen not to do it. They have chosen to look in the other direction. कि मैं आंख बंद करके दूसरी तरफ मुंह कर लूंगा तो वो प्रॉब्लम्स चली जाएंगी. वो अब है ही नहीं. अब मैं देख ही नहीं रहा हूं, मैं तो पीट करके खड़ा हो गया हूं. Okay, okay. Okay, got it. Yeah, thank you. That is why it's called bypassing. I am not even looking at it. I am choosing to not look at it. It's not they are not. It's not कि वो aware नहीं है, वो aware हैं. ये तो और भी डेंजरस है ना. अवेयर नहीं हो, इग्नोरेंट हो, तब तो मान सकते हैं कि दैट पर्सन वाज इग्नोरेंट, दे डिडंट इवन नो अबाउट दिस थिंग, तो फिर उसको बाईपासिंग नहीं बोलेंगे, इट्स जस्ट इग्नोरेंस. दीज So पीपल आर I सुपर think I स्मार्ट, get. they are more over smart for themselves. That is what the problem is. I think I get your point at some level because ये चीज शायद मेरे साथ भी एक लेवल पे हुई थी जब मुझे सारी अवेयरनेस हुई थी रिसेंटली व्हेन आई वाज इन दैट ट्रॉमा एंड देन मुझे सारी अवेयरनेस हुई थी तो वो इतना ज्यादा हो गया था एकदम से सारी नॉलेज और ऊपर से इमोशंस और सब कि आई वाज लुकिंग फॉर सम एस्केप्स थिंग्स लाइक आई नो अब उस टाइम पे मुझे ये सारी Exactly, चीजें पता escape थी. is the right word. Escape is हाँ. the right word, but they will not say it. They will not say it कि they are escaping, but they are escaping. हम्म. According to them, they are not हाँ, escaping, सो but उस they are टाइम पे मैं escaping. मोमेंटरी खुशियां ढूंढ रही थी. हाँ, उस टाइम पे मैं मोमेंटरी खुशियां ढूंढ रही थी कि टीवी देख लिया, फैमिली के साथ बैठ लिया, या आज का दिन तो चलो सही चला गया, अब कल देखते हैं, तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग गई. तो लाइक आई वाज ऑन वर्किंग ऑन माई सेल्फ, लेकिन ये चीजें मुझे खुशी दे रही थी और मेरा ध्यान बटा रही थी, तो मुझे बेटर फील हो रहा था. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों ये सब काम कर रही हूँ, और क्योंकि इससे तो मुझे और पेन ही मिल रहा है. राइट. Correct. And not only they will do it, they will actually make other people feel bad about it. अगर उनके सामने जाके कोई इस तरह की बातें कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो they will make them feel bad about it as well कि मुझे तो हमें सुनना ही नहीं है, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत करो. तो वो उनको भी सप्रेस करेंगे क्योंकि उनको करना ही नहीं, उनको अपना भी नहीं करना है और किसी का भी नहीं सुनना है. तो उनको ऐसे लगता है कि इसकी दवाई ये है कि बस बी इन पॉजिटिव वाइब्स एंड ऑल दैट. कि ऐसे है कि आप एक चेयर पे, कांटों वाली चेयर पे बैठे हो, चुभ रही है, पर अपने आप को, बट देन यू आर डूइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन एंड ऑल दोस थिंग्स. चेयर चुभ रही है, पता है, ये नहीं है कि उसका कुछ करें, लेकिन अपने आप को बस ये बताए जा रहे हैं कि नहीं चुभ रही, आई एम डूइंग दिस एंड दैट. ये बाईपासिंग है. दिस इज डिल्यूशन. दिस इज नॉट एक्नॉलेजिंग द रियलिटी. Chahat, your hand is up. You want to say something? Yeah, hi, thank you. So my question is somewhat related to Palak, that she said that her friend is like just crying about his problems and she's a listener, that's why he's doing this. So in my case, I am a good listener and a giver. So I'm always up for help, you know. So it's like I have faced so many problems or challenges in my life and overcame with them. And being the strong-headed personality, so it's by nature that I am a good listener and I listen to people's problem, and people come to me and like share their problems. But that gives me happiness that yeah, maybe I'm born for it, and I give them awareness that rather than crying, you can do this, you can be a strong person, work on it, and all that. Like maybe I'm not a professional, but yes, in some way I can just help them. But the problem here is I'm not sure what this is called, but eventually whenever I'm doing this in all this process, I'm always up for the help, even at night, even in the morning. But when I need help, there is no one. I'm not able to share my problems with anyone, my stress, to channelize my stress, to overcome my anger issues. And all this is like compiling and giving me problem, anxiety, um, you know, that my I'm stuck somewhere. Maybe I'm not able to work on myself. I'm not able to understand what is going on with me in my mind. I'm not able to, resolve my own issues while I'm doing that for others, and they're really thanking for that. But
I really don't know what is going on. So I'm not sure what to do in that case. Hmm. See, you attended Unstuck workshop, no? Did you attend that? You didn't attend that, no? I couldn't complete that event, हाँ, unfortunately. क्योंकि Yeah. that is why. हाँ, because I answered this question. Okay, now I realize you didn't. हाँ. Okay. So simple example इसका, if I can explain this, is कि there is a like a best brain surgeon in the world who is doing brain surgery on everybody. Can they do brain surgery on themselves? No. Yes or no? No. But they are the best. They have been helping so many people, and so many people have been fixed and all that. So why can't they do it on themselves? Maybe they cannot see their own brain, Hmm. or I, I actually don't know the answer. Correct, correct. So this is the thing, that just because we are able to do these things for other people, we are not some. There are some things that we cannot resolve for ourselves. हमें दूसरा ही लगता है. This is how Yeah. the setup is. So this is a constant message, and in Unstuck also I mentioned this as well. Ki do not take this as your shortfall or anything, क्योंकि some things we cannot do on ourselves. Simple example is कि brain surgery करने के लिए you need to be in a certain anesthesia state. So Mhm. operation करने के लिए you need to be alert, but as a patient you need to be under anesthesia. So how can you be in both states at the same time? Yeah, right. Right? So I understand. it is Yeah. easy for you to help another person क्योंकि वो दूसरा anesthesia में है ना, तो you can help. बट आपको Mhm. एनेस्थीसिया दे दिया, आपकी ब्रेन की सर्जरी करनी है, यू टेकन एनेस्थीसिया, यू आर अनकॉन्शियस, बट नाउ यू वांट टू बी अलर्ट टू डू इट आल्सो, एंड यू कांस्टेंट सेइंग मैं क्यों नहीं कर पा रही, मैं क्यों नहीं कर पा रही, बिकॉज दैट इज द रियलिटी. नहीं हो सकता है. It's nothing to do with your capabilities. You can very well help another person. मेरे को कोई we have been we have been helping people in their relationship challenges and all that. When I have any challenge, I have to go to my masters. I have to go to my mentors to get this resolved. क्योंकि वो नहीं हो सकता है. The mind that creates the problem can't solve the problem. You need another perspective. Right. Yeah. Sometimes we know something, like I said yesterday, to someone's revert on my message that we need a mirror who can show us mirror, right? We know something, but we don't implement because we want it to hear from someone else. Exactly. And Exactly. like you That mean we need a coach or a mentor who can like hold our hand and get us through it. you need a you need a third you need a second person, a third person to help you. That person could be anybody. So I am using a loose word here as a mediator. So you need another mediator to help you. Now that person could be a friend, that person could be a family member, that person could be a professional, could be anyone, provided that you are taking help from the right kind of person. अभी आपको अगर ब्रेन सर्जरी करानी है और आपके फैमिली में लोगों की बहुत अच्छी इंटेंशन है कि तो आप करवा लोगे क्या, अगर वो बोलेंगे कि मैं कर देता हूँ, No. तो यू विल ऑल्सो सी ना कि उनके पास कैपेबिलिटी है क्या, स्किल्स हैं क्या ये करने के. तो Yeah. यू हैव टू अप्रोच द राइट पर्सन टू डू इट. आपको अगर यू 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 मे हैव वेरी गुड इंटेंशंस, इज इट पॉसिबल कि यू जस्ट टर्न अप टू गूगल एंड से कि आई हैव वेरी गुड इंटेंशंस, आई कैन वर्क वेरी वेल, पर मुझे कोई स्किल्स नहीं है, मैं सीख लूंगी, तो आपको जॉब मिल जाता है क्या इंटेंशन के बेसिस पे? No, not at all. So they check skills, capability, experience, all these things are important. So this is where you need to seek, you are seeking guidance. First thing, be open to seek guidance. Second, seek guidance from the right kind of person. That right kind of person could be anybody that you trust. अगर कोई है फैमिली में, कोई है फ्रेंड जिसने जो ये
समझता है इन चीजों को, who have helped other people and all that, then by all means take their help. If you don't know anybody, then approach a professional. Yeah, and do you think, like, if I have multiple problems and I should seek multiple people for different problems, or a single person can handle those problems? Because I've tried like this. I'm always open to challenges. I'm always open to solutions, to receive the feedbacks and work on it. But then like, I don't have a single person where I can get solution. Sometimes I share the problems with my friends. They do understand, because, or they can feel, because they must or might have been through the same journey. But uh, like, I'm not convinced with their solutions, because those solutions seem to be right, but from their perspective, not from my perspective. I'm like, then I तो वही तो मैं analyze बोल रहा the हूँ ना, solution. Yeah. that's what I'm saying ना, कि approach the right person who can give you the right kind of guidance. It's not enough that people have good intentions to help you. Good intentions are fine, but here good intentions are not enough. They need to have the right kind of skills also to help you. If they don't have the right kind of skills to help you, then they are not the right kind of people. Right. Got it. Hmm, Thank you. no problems. Prerna, your hand is up. Yes. Yes, you are. Am I audible, Akarma? Yes. Yeah, so I just wanted to share how I process things whenever something goes wrong. And I wanted to know if the way I process it, am I also, doing the spiritual bypassing? So बस वही मुझे जाना था. तो जब भी कुछ गलत होता है मेरे साथ, कोई कुछ बोल देता है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, या I feel betrayed or I feel very disappointed or something like that happens. So yes, I have my own ways of coping with it. One is talk to a friend, talk to my family कि आपको पता है ऐसा हुआ, कैसे उसने ऐसे मुझे बोल दिया, all of this thing. And then I start lamenting about it कि पर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ. फिर रात को जब नींद नहीं आती है ना, तो आई स्टार्ट जर्नलिंग. एंड मेरी ऐसी आदत है कि जब भी मैं जर्नल करती हूँ तो आई ट्राई टू गिव इट अ मीनिंग, क्योंकि आई एम ऑलवेज सीकिंग अ क्लोजर. तो व्हेन आई गिव इट अ मीनिंग, आई ऑलवेज गिव इट अ मीनिंग लाइक दिस कि ये मेरे ही अच्छे के लिए हुआ होगा. इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. There is something called divine plan. There is something called divine timing. प्रेरणा, you don't need to know all the answers today. आज मेरे पास क्लैरिटी तो नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ग्रेस तो हो सकता है टू हैव पेशेंस, टू बी ग्रेसफुल. एक दिन ऑल दीज थिंग्स विल मेक सेंस. तो मूव ऑन कर जाओ. जब पीछे मुड़ के कल देखोगी तो यूल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ था. तो वन डे यू विल लाफ एट ऑल दीज थिंग्स. तो अभी कोई बात नहीं. एंड देन आई एम एबल टू स्लीप. So is it also something like I'm ignoring Hmm. it? Yeah, yeah, that is bypassing. Correct. Okay. Hope is good. Hope is not a bad thing. Hope is a very good quality. Um, but we have to see that hope और delusion के बीच में difference होना चाहिए. So आपका accident हो गया and you have broken leg and bleeding and all that, and instead of going to the doctor, taking medicine, getting treated and all that, you just go home and you just hope कि एक दिन ये सब ठीक हो जाएगा. एक दिन जब मैं पीछे मुड़ के देखूंगी तो I have learning from this and all that. How is any of that going to solve the problem that you are currently going through? Time is not the best healer. It's a very wrong statement. टाइम अगर हीलर होता तो फिर किसी किसी को बता दिया डॉक्टर ने कि आपको कैंसर है और वो जाके घर पे बैठ गया. टाइम इज द बेस्ट हीलर, तो I'll heal. Time is not the best healer. You have to take the right action and then time can be the healer. बिना एक्शन लिए time is not the right healer. Time will only deteriorate the problem. Yes. Take the right action, take the right treatment, go on the track, and then you can say कि हाँ एकदम से तो नहीं हो जाएगा ना. अभी doctor gives you a 6-day course of a medicine, then we can say time is the healer. 6 दिन लगेंगे. So you don't take all 6 days doses in one go कि नहीं, time नहीं, अभी मेरे को
टाइम नहीं है तो अभी मैं 6 की 6 अभी ले लेती हूँ। तो ऐसे तो नहीं होता है। तो हाँ, तो लेनी पड़ेगी। एंड हाँ, 6 दिन के बाद नहीं हुआ तो यू गो टू द डॉक्टर। बट 6 दिन में हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो और 2 दिन की दवाई मिल जाएगी और 4। बट कुछ ना कुछ होके वो एक फाइनाइट टाइम में वो खत्म तो होगा ही ना। यू स्टार्टेड टेकिंग द मेडिसिन नाउ, एंड 6 में नहीं हुआ तो 10 में हो जाएगा, 12 में हो जाएगा। पर नहीं लेने से ये सोच के बैठ गए कि टाइम इज द बेस्ट हीलर, हो जाएगा हो जाएगा, पीछे मुड़ के देखेंगे तो देयर बी लर्निंग इन दिस। व्हाट लर्निंग? So this is like kind of like toxic positivity वैसे बोल सकते हैं हम जैसे. Exactly. So this is very dangerous. So having positivity and all that is good. So जैसे I think पलक बोल रही थी या चाहत बोल रही थी, I forgot, कि someone coming, शायद चाहत बोल रही थी, someone coming to her and asking, हाँ, कोई आ रहा है, आप उसको थोड़ी पॉजिटिविटी दे रहे हो, थोड़ा सा उसको अपलिफ्ट कर रहे हो, थोड़ा मोटिवेशन दे रहे हो कि ठीक हो जाएगा, बट साथ में उसे काम भी कर रहे हो, तो दैट इज गुड। बट सिर्फ मोटिवेशन दे के उसको चने के झाड़ पे चढ़ा के भेज दिया तो उससे क्या होगा उसको? Right. सिर्फ मोटिवेशन थोड़ी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता है, सिर्फ पॉजिटिविटी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो वो दोनों ही की जरूरत है ना। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो कि ये दिस इज द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ एंड आई नीड टू एड्रेस दिस। as much uncomfortable this thing is, I still need to see through this। क्योंकि आज तो नींद आ गई किसी तरह से, तो कल फिर नहीं आएगी, कल फिर से उसी में बैठोगे, परसों फिर नहीं आएगी। तो हाँ दिस वही इज तो नो ये डिफरेंट। हाँ तो हाँ, मुझे फिर ऐसे लगने लगता है कि मैंने उस पे मरहम लगा के बैंडेड कर दिया, अभी मेरे को खुद उसको बैंडेड को निकाल निकाल के देखना नहीं है हील हुआ या नहीं, हील हुआ या नहीं, बट ऐसा हो रहा है होगा ही कि ना। तो ये कोई, हाँ. दिस इज नो डिफरेंट, बीइंग इन दैट जोन इज नो डिफरेंट देन समबडी चूजिंग कि चलो मैं 4 पैग मार देता हूँ। तो वो दारू में अपना गम घुला दिया उसने, लेकिन आपने इसमें कर दिया, तो डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, सेम थिंग, Hmm. इट्स जस्ट Yeah, many a डिस्ट्रैक्शंस। times I just think that it is it was just a karmic account getting settled. मेरा भी कुछ कर्म था, सामने वाला का भी कुछ कर्म था, तो karmic account settle हो गया, and ultimately yes, that is the thing कि it was destined to be this way, and God allowed it to happen this way. तो मैं उसको फिर एक ऐसा एक मीनिंग दे देती हूँ, एंड उस टाइम के लिए या इट डज गिव मी अ लॉट ऑफ कंफर्ट. वो मीनिंग देना कोई गलत नहीं है, अगर वो मीनिंग सस्टेनेबल है। अगर वो एक बार दे दिया और वो काम हो गया, अगर वो दे दिया और उस दिन तो नींद आ गई, फिर सुबह उठे और फिर से वही चीज शुरू हो गई, तो फिर तो अपने आप को बेवकूफी बना रहे थे ना। एक नाइट के लिए बना लिया, फिर माइंड वापस से उसी पॉइंट पे आ गया, नहीं मुझे तो ये पॉइंट नहीं सही लगा। तो हाँ करेक्ट. तो सीप इन तो नहीं हुआ ना, दैट डिडंट कनेक्ट। यस. हाँ, कनेक्ट So हो basically, जाता I'm और वो trying to बात सॉल्व हो uh, जाती। yeah. हाँ, वो एक्सेप्टेंस आ जाती, अगर वो ऐसा ही है, वो एक्सेप्टेंस आ जाती है, एंड यू कुड देन यू नो फ्रॉम देयर ऑन यू डोंट थिंक अबाउट इट एंड ऑल दैट, तो फिर बढ़िया है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर दैट इज नॉट बाईपासिंग। हम्म. पर वो हुआ तो नहीं ना। हाँ वही तो हुआ दिस तो इज नहीं. व्हाई इट इज कॉल्ड बाईपासिंग, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड बाईपासिंग, क्योंकि हम ये सब कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और हम ये सब अप्लाई करते हैं, और फिर उसके बाद हमें जो एड्रेस करना है वो नहीं कर रहे, और हमारा माइंड ट्रबल में है कि नहीं मुझे तो देखना है, मुझे तो देखना है। अभी के लिए ठीक है, वो शांत हो गया। एक कोई छोटा बच्चा है जिसको आपने कुछ तो बहला फुसला के, चाहे तो साम दाम दंड भेद कुछ भी करके उसको आप भी के लिए तो चुप करा दिया, तो सुबह उठ के फिर शुरू हो जाएगा। बट फिर ऐसे लगता है कि मीन्स I can only decide what meaning I can give to it. No, can I pick and choose which which emotions I experience in life? मतलब Pick and choose which emotions you feel in life का क्या मतलब है? All emotions are there to feel. How can you pick and choose emotions? Then again, what we were talking about, ki, um, that is again spiritual bypassing, that you are not acknowledging your human condition.
कि ऐसा तो नहीं है कि अभी हम कल कल मेरे गुरु हैं, उनका हम एक लेक्चर सुन रहे थे, एंड ही वाज सेइंग कि एनलाइटनमेंट के बाद क्या होता है। एनलाइटनमेंट के बाद अगर हम ये बोलते हैं कि ईगो डिसॉल्व हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस इंसान को जिस नाम से बुला रहे थे, तो वो क्या पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे? अगर 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 बुद्धा का नाम बुद्धा था, उसको एनलाइटन के बाद अगर कोई बुद्धा के नाम से रिफर कर रहा है, सिद्धार्थ के नाम से रिफर कर रहा है, गौतम के नाम से रिफर कर रहा है, तो क्या वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे? तो क्या वो उनको अगर मच्छर काटेगा तो उनको तकलीफ नहीं होगी? क्या अगर वो मिर्च वाला खाना खाएंगे तो उनको जलन नहीं होगी? क्या उनको गर्मी नहीं लगेगी? क्या उनको सर्दी नहीं लगेगी? क्या उनको वो अगर गर्म पानी में हाथ डालेंगे तो उनका हाथ जलेगा नहीं? तो व्हाट डज इट इवन मीन? बॉडी है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज तो रहेंगे ही ना। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगी कि मतलब अब तक, मतलब अप अंटिल नाउ बिफोर अटेंडिंग दिस कॉल, मेरा व्यू ऐसा था लाइफ के बारे में कि लाइफ थ्रोस मेनी थिंग्स एट यू, बट मैंने जैसे ना वो पहन के रखा हुआ है, जैसे सम काइंड ऑफ कलर्ड ग्लासेस जिसको बोलते हैं रोज टिंटेड ग्लासेस, कि उस ग्लास से सब कुछ आपको रोजी कलर का ही लगेगा। मतलब आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ टू सी थ्रू दोज ग्लासेस इट सेल्फ, हाँ, एंड दैट्स आई बैड। एम I am because I'm wearing those glasses, and that is by wearing those glasses I'm telling myself that you know that is transformation. I'm calling that transformation. हाँ कि these are uncomfortable emotions, but यही emotions को जब मैं ये नजर से देखूंगी, ये ग्लास पहन के देखूंगी, तो वो अच्छा ही दिखेगा। तो that is how I'm telling myself. हाँ हाँ। तो when we talk about transcendence, transcending these emotions and all that, transcendence doesn't mean कि वो खत्म हो गया, या वो you gone past it. Transcendence means कि अब वो आपको बॉदर नहीं कर रहा है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि राइट नाउ यू हैव एनफ मनी दैट व्हेनेवर यू वांट आप राशन ऑर्डर कर सकते हो, आप आटा दाल चावल जाके खरीद सकते हो। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू हैव ट्रांसेंडेड दैट कंडीशन। ऐसा नहीं है कि आपको आटे की जरूरत नहीं है, चावल की जरूरत नहीं है, दाल की जरूरत नहीं है, चीनी की जरूरत नहीं है, बट वो आपको बॉदर नहीं करता, यू हैव एनफ मनी। सेम वे कोई भिखारी होगा, वो हर समय उसी में घुसा रहेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि नेक्स्ट 100 रुपए कहाँ से आएंगे, नेक्स्ट चावल कहाँ से खरीदूंगा। तो उसमें अटका हुआ है, ही हैजंट ट्रांसेंडेड दैट येट। तो ट्रांसेंडेंस इज नॉट कि वो चीज मीनिंगलेस हो गई है। ट्रांसेंडेंस मीन्स कि अब वो आपको बॉदर नहीं करती। सो ट्रांसेंडिंग एंगर, ट्रांसेंडिंग एनीथिंग मीन्स कि अब वो आता भी है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यू जस्ट सी देम कि वो आएगा ही, आपको पता है बॉडी रिस्पॉन्सेज हैं, ऐसा होगा, गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी, गुस्सा भी आएगा, खुशी भी होगी, बट अब वो बॉदर नहीं करता कि ये आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं है। तो योर फोकस इज नाउ ऑन बिगर एंड बेटर थिंग्स, क्योंकि वो तो है। हाँ, वो चीज अपने को फिर वो सताएगी नहीं। अभी क्या हो रहा है कि वो मीनिंग तो मैं दे सताएगी रही नहीं, हूँ, हाँ, अभी लेकिन बार बार पर वही वो चीजें सता रही है, सता रही है। हाँ, तो सता फिर रही है। से मैं सो जाके यू हैवन पन्ने पलट ट्रांसेंडेड के, इट। यस, तो मैं फिर से हाँ पन्ने पलट तो के देखती हूँ कि ओ आई हैड जर्नल लाइक दिस, एंड आई फिर से अपने आप को हौसला देती हूँ कि प्रेरणा, तेरे को पता हाँ तो है, बताया तो था तेरे को कि हर चीज का एक वक्त होता है, अच्छे वक्त का भी एक वक्त होता है, तो अच्छे वक्त को भी वक्त दो आने के लिए। तो ऐसे ही बोलती रहती हूँ मैं। हाँ हाँ। एक तो इन चीज, सब तो इन सब चीजों को ट्रांसेंड करना है, वेयर वेयर देन यू डोंट से कि हाउ डू आई चूज इमोशंस एंड ऑल दैट, फिर ये फर्क ही नहीं पड़ेगा। Saying no emotions are good, no emotions are bad, they are just emotions. You've transcended it. आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, वो आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आप अटक नहीं रहे हो उसमें। आप कोई भी मीनिंग नहीं निकाल रहे हो, फिर से गुस्सा क्यों आ गया, फिर से फ्रस्ट्रेशन क्यों हो गई, फिर से मैं ये क्यों हो गई, फिर से ऐसे क्यों हो गया। तो अटक जाने को ही बोलते हैं, उसमें अटकना नहीं है। वो आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, हो रहा है, एंड यू आर जस्ट ओके विद एवरीथिंग। यस आज मनीष। जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, तो यू नो
I'm having hope कि it still looks to me like a possibility कि क्या सच में ऐसा एक दिन आ सकता है जहाँ पे these things are not going to bother me. पता है, I'm feeling like that. Really, can a day come like that where these things are not going to bother me anymore, and like what you said, I just hope that मान लो नहीं आया, मान लो नहीं आएगा, लेकिन does it mean कि you will stop working to go towards it? मान लो no. आप 100% नहीं पहुंचोगे, मान लो आप अपनी लाइफ में 40% ही पहुंच पाए, 50% ही पहुंच पाए, Hmm. wouldn't life still be better at 50% than at zero right now? Yeah, absolutely. Yes. तो क्या फर्क पड़ता है? पूरा पूरा नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? You know कि ये करना है तो करना है। Hmm. अगर ये करके 5% भी चेंज आ रहा है, 10% भी चेंज आ रहा है, 10% भी you are not getting bothered by things and all that, isn't life is 10% better already? Yeah, absolutely. हाँ, तो बस, तो फिर 10 से 15 भी हो जाएगी, 15 से 20 भी हो जाएगी, 20 से 50, 60, 70 जो भी हो जाएगी, as whatever it is. Hmm. Yes. So 0 से 100 पे पहुंचना ही क्यों Hmm. टारगेट है? 0 से 5% पे पहुंचना भी तो अच्छा ही हो सकता, माना जा सकता है ना? जी बिल्कुल. Yes, Anamika, I think you wanted to add something. No, I was just saying that, none of these things, like the things that you also mentioned, they are good practices. They are wonderful practices. The only point that I guess we need to check for ourselves is that am I using these practices to escape my, unresolved wounds and trauma, and, to go through the uncomfortable emotions, or am I using these things to actually go through them, to actually, maybe develop my capacity to go through them? So like you're asking कि ये वाला state achieve हो सकता है क्या? So the paradox of life, I can say, is that the only way out of pain is through it. Hmm. Right now, how brave we are, and how straight in the eyes we can see, and we can still just watch it and look at it, observe it. That depends. That journey can be different for all of us. It is different for all of us, but the thing is that the way out of pain is through it, right? But everything that we do in our lives, so people who are spiritual or non-spiritual, so if the whole idea is only to escape the pain, actually that keeps us more entangled in the pain, right? And because the whole reason why we try to escape the pain, because कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में अभी भी वो सेट होता है कि ये सारी जो चीज है, ये this is bad, this is wrong, this is not good. So innately what is happening inside us, so the child in you, let's suppose you gave an example of things that happened with you. So there was some part of you which got hurt, maybe the part of you which got sad, or which is actually going through the process of pain, right? And when we do this, चाहे वो spiritual work के through हो या कुछ भी हो, we kind of have a judgment for that part, saying that the way you feel is not right, because being spiritual, or being an evolved person, or X or Y or Z, or everybody expects us to be a happy person, that means that you don't get sad, or you don't feel all of these emotions. तो वहां पे जो judgment पैदा होता है, तो हमें लगता है कि शायद हम उसको देखेंगे नहीं ना, एंड वी स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, तो वो जो हमारा पार्ट है वो डिसअपियर हो जाएगा. बट द ट्रूथ इज दैट अंटिल यू सी इट, it doesn't disappear, right? It's still going to be there. So the only way for it to become a part of you properly is when you look at it. And when you look at it, along with that part, there would be myriads of emotions coming up on the surface, where you will feel all sorts of things, right? And yet you be brave enough, courageous enough, you stand your ground, and you say that no matter how difficult it seems for me, this part of me which is feeling bad. And people tell us all the time that if you're being sad, if you're crying, all sorts of things, that ye hai kya, wo hai kya, are you a weak person? So we start
bifurcating these things in our head, saying that these emotions are good, these emotions are bad, and we ignore. The more we ignore, the more we remain stuck, right? So the whole point of having this conversation is not कि अब हम negativity की तरफ चले जाएं. The whole point is to come to the midpoint where we are able to bring both of these things together. तो ये जो गुड और बैड की चीज है कि ये गुड इमोशंस हैं तो ये फील करना है, ये बैड इमोशंस हैं इनको रिजेक्ट करना है, वो करने की जगह rather you use your emotions as a guidance system which is showing you something that you need to integrate, that you need to heal as a part of you. You do that, then emotions का क्या है, वो तो एक moment है and then they are just like, it's called energy in motion. They get dissolved and they go away. Right? But the more we repress it, the more we suppress it, the bigger and bigger it becomes. So spiritual practices are good, they are amazing, but it's more important that from which space are we doing it? Are we doing it from the space of integration, or are we doing it from the space of escaping something? Yeah, that's what I wanted to add. Okay. Okay, so that means that I'm not in complete acceptance. That acceptance, what I have, which I feel I have, is kind of superficial. It's not really true acceptance of those emotions. Yeah. Because in true acceptance, there is no judgment for that whether you should have this emotion or not. Because the truth is that emotion is there in the present moment. It's there. It's your truth. It's your reality. What's the point of saying that it shouldn't be there, or I don't want it to be there, or it's not there? It's there. And The pain is real. हाँ वही. Exactly, the pain is real, right? And you don't start dwelling with the pain and everything, but acknowledging it is crucial, right? And when you acknowledge it, when you look at it in the same process and you have no judgment for it, then acceptance comes, and that acceptance is real acceptance, क्योंकि उसमें there is no rejection, there is integration. कि अगर ये है तो ये भी ठीक है. And it's very simple that what you resist persists and what you embrace simply dissolves. So जब हम उसको भी embrace कर लेते हैं, then it holds no power on us. It only held. Yeah. So on this topic of acceptance, I wrote one blog post, and you can check that one out. Because this word acceptance is very misunderstood, and we use it very, very frequently and very frivolously. That what I have observed. Acceptance एक चीज नहीं है. Acceptance happens in stages. So अगर मैं इसको minimum भी वैसे तो ये थोड़ा complicated है, but if अगर मैं simplify करके इसको बताऊं तो I've written a blog post on this one, so I would encourage everyone to have a look at it to understand it better. लेकिन अगर मैं इसको बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से तीन इसमें भी बताऊं ना स्टेजेस में, तो फर्स्ट लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस हैपेंस when we are hurt and we can't do anything about it. तो we just know कि ऐसा ही है, तो there is whatever it is, people will not change and I have no control and I can't do anything about it. So then we just say I accept. तो हम बहुत जल्दी से वहां पे वो वर्ड एक्सेप्टेंस यूज कर लेते एंड वी फील कि अभी हो गया. लेकिन दिस इज अ वेरी early stage of acceptance. Then the second acceptance that comes is acceptance via understanding. Understanding, when I understand कि there are good people, there are bad people, there is good, there is evil, there is all sorts of things that happen. सब अपना अपना काम कर रहे, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे. So when I understand that, then a next level of acceptance comes कि ऐसा ही है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और वो जो उनको करना है वो अपना कैरेक्टर दिखा रहे हैं, और that is what is happening. It is happening. Then the true acceptance, the actual acceptance, जो वर्ड हम जहाँ यूज करना चाहते हैं, जहाँ हम चाहते हैं कि लोग वहां तक पहुंचे, that is acceptance via equanimity.
And when you reach that stage, acceptance by equanimity, then you realize कि ये ऐसा अच्छा बुरा, right wrong, hero villains ऐसा तो कुछ था ही नहीं. So it's just what it is. And when you realize this as is thing, अभी भी जब तक आप लोगों को कैटेगरीज में डिवाइड करते रहोगे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, and then you are having an acceptance around it, it's just on a mental level. वो भी एक्सेप्टेंस ही है, वो भी एक लेवल की एक्सेप्टेंस है, लेकिन वो ट्रू नहीं है. और उससे पहले की जो एक्सेप्टेंस है, जहाँ पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है चीजों पे, और यू जस्ट सेइंग अब या एक्सेप्ट, अब कर क्या सकते हैं, अभी तो यही है, वो बहुत अर्ली स्टेज की एक्सेप्टेंस, वो भी एक्सेप्टेंस है, लेकिन वहां पे रुकना नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ शुरुआत है एक्सेप्टेंस की. जो ट्रू एक्सेप्टेंस आती है, दैट इज व्हेन यू रीच द स्टेट ऑफ इकोनॉमिटी, दैट इज व्हेन दिस थिंग कम्स. और जब आप यहां पहुंचोगे ना, तब आप देखोगे कि आपकी लैंग्वेज से एक्सेप्टेंस वर्ड ही ड्रॉप हो गया. तो जिस दिन एक्सेप्टेंस वर्ड ड्रॉप हो गया ना आपकी डिक्शनरी से, आपकी लैंग्वेज से, उस दिन समझ जाना कि आपने ट्रूली में चीजों को एक्सेप्ट किया. जब तक एक्सेप्टेंस की बात भी कर रहे हो और ये भी बोल रहे हो कि मैंने एक्सेप्ट किया एंड ऑल दैट, तब तक अभी भी वहां पहुंचे नहीं हो. जिस दिन वो बात करनी ड्रॉप हो जाएगी, और एंड अगेन हियर दिस वेरी वेरी केयरफुली, व्हेन आई एम सेइंग कि वो ड्रॉप हो जाएगी, वो होना है. अगर आपने वो करा, जबरदस्ती किया, दैट इज स्पिरिचुअल बाईपासिंग. देन यू विल अगेन फॉल इन द सेम ट्रैप कि आप कर तो नहीं रहे हो, लेकिन बोल रहे हो कि अब, या फिर अपनी लैंग्वेज से वो वर्ड आपने मिटा दिया, आपने उसके बारे में बोलना बंद कर दिया, क्योंकि आपने सुना कहीं से तो कि ये होगा तब ट्रू एक्सेप्टेंस आएगी, तो इसका मतलब अब मुझे ये बात करनी बंद कर देनी चाहिए. दैट इज स्पिरिचुअल बाईपासिंग. करनी बंद नहीं करनी है, वहां तक पहुंचना है जहां पे अपने आप बंद हो जाए वो. सो इट इज कि जैसे कि एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बारिश हो रही है. नाउ वन पर्सन फील्स वेरी मिजरेबल कि बारिश हो गई, फिर से बारिश हो गई, कांट गो आउटसाइड, नो, घर में ही बैठे हैं बहुत दिन से, एंड कपड़े नहीं सूख रहे हैं, सब जगह पानी भरा हुआ है, बाहर नहीं जा सकते, एंजॉय नहीं कर सकते, बहुत कलप रहा है वो इंसान बारिश. देन देयर इज अनदर पर्सन हु इज वेरी हैप्पी कि अरे वाह, फिर बारिश हो गई, कितना अच्छा मौसम हो गया है, एवरीथिंग इज सो ग्रीन, आई लव इट, दिस दैट. फिर ये जो पहला वाला इंसान है, ये इतना कलपने के बाद एक टाइम पे होता है, अच्छा चलो छोड़ो, जो भी है अभी हो रही है तो हो रही है, तो वो एक एक्सेप्टेंस. फिर एक दिन वो बोलता है कि ठीक है, आई एक्सेप्ट कि बारिश हो रही है, तो ऐसा है. तो आपके एक्सेप्ट करने से तो ऐसा नहीं है ना कि इंद्र भगवान आपके सामने आएंगे एंड दे विल बाउ डाउन टू यू एंड से थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग. वो तो जो है वो है. सो एक दिन यू रीच अ पॉइंट जहां पे यू जस्ट सी कि दिस इज व्हाट इट इज. मैं ही इसमें अपने आप ही मीनिंग डाल रहा था, और मैं ही इस मीनिंग से या तो खुश हो रहा था या परेशान हो रहा था. सो ना तो उसमें ये था ना वो था, कुछ भी नहीं था. इट वॉज जस्ट व्हाट इट इज. इट्स जस्ट रेन, इट्स जस्ट फैक्ट. उसका ही मैंने कोई मीनिंग निकाल लिया, फिर उसी मीनिंग से मैं परेशान हो गया, या उसी मीनिंग से मैं खुश हो गया. बाद में मैंने उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, फिर मैंने अपनी ही पीठ थपथपा दी, और मैंने बोला अरे वाह, आई इवॉल्व, कितना बढ़िया काम कर दिया मैंने. सो ये खेल हम अपने आप अपने साथ खुद ही खेलते रहते बस. तो जिस दिन ये खेल खेलना बंद हो जाएंगे ना, उस दिन समझ लेना कि ट्रू एक्सेप्टेंस आ गई. So Akarma, I want to add here something like Prerna also mentioned कि कोई भी जब situation उनके साथ होती है, तो she tries to find the meaning, and then she also tries to see what that situation is trying to teach her.
मतलब हम हर चीज में लेसन ढूंढते हैं, और ऐसा तो मतलब बोला भी जाता है, और मतलब हर जगह हमने सुना ही है कि हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती है। आपका भी एक जैसे ब्लॉग था कि व्हाट दिस सेटअप इज ट्राइंग टू टीच यू, तो वो हाँ चीज देखो, हाँ, तो वो चीज इट कहाँ इज पे यहाँ पे इम्पोर्टेंट। फिट होती है एक्सेप्टेंस में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी गुड। वो यहाँ पे फिट होती है कि दिस इज ऑल डेवलपमेंटल स्टेजेस, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। बाईपासिंग दिस इज स्पिरिचुअल बाईपासिंग। कि आप ये बोलो कि अच्छा, जब अल्टीमेटली ऐसे ही पॉइंट पे पहुंचना है जहां पे ये चीजें मेरे को फर्क ही नहीं करनी चाहिए, तो फिर मैं अभी वहीं पहुंच जाता हूँ। वो पहुंच नहीं पाओगे। दिस इज स्पिरिचुअल बाईपासिंग व्हेन यू आर फूलिंग योरसेल्फ कि मैं वहां पहुंच गया। क्योंकि यू हैव टू गो थ्रू दीज डेवलपमेंटल स्टेजेस टू सी द नॉनसेंसिकल इन ऑल दिस। कि इतने टाइम से मैं खुद ही अपने रास्ते में पत्थर डाल रहा था, फिर खुद ही उसको साफ कर रहा था, फिर खुद ही बोल रहा था कि मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया इससे, आई इवॉल्व्ड एंड ऑल दैट। ये मैं खेल इतने टाइम से खेले जा रहा था, खेले जा रहा था, और फिर एक दिन समझ में आएगा कि क्या बकवास था। बट वहां तक पहुंचने के लिए यू हैव टू प्ले दिस प्ले। दिस इज द डेवलपमेंटल स्टेजेस। You cannot bypass these developmental stages. Even if you know what I'm telling you this, trying to reach that stage, what I'm telling you, trying to reach that stage, bypassing these developmental stages is spiritual bypassing. Because you cannot bypass life. You have to go through it. You have to go through all these things, अंडरस्टैंडिंग कि एक दिन आप ऐसे पॉइंट पे पहुंचोगे जहां पे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या खेल खेल रहा हूं। खुद ही किसी सिचुएशन को, खुद ही किसी चीज को अपने आप ही मतलब दे देता हूँ, फिर अपने आप ही उसमें से लेसन्स भी ढूंढ लेता हूँ, फिर अपने आप उसमें से अपनी इवोल्यूशन भी कर लेता हूँ, और फिर बोल देता हूँ कि ये हो गया। मतलब क्या था ये, मतलब कर कुछ ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ऑल एनलाइटेंड बीइंग्स ऑलरेडी। बट वो समझने के लिए ये सारा खेल खेलना पड़ेगा। सो मीन्स जितना भी हम अभी हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन होती है, ट्रॉमा होता है, तो हम जो अपने चाइल्डहुड वुंड्स देखते हैं या फिर कंफ्यूजन, हाँ, कैओस, रोना धोना सब जो होता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो हमें दैट इज द नहीं प्रोस। बाईपास करना हाँ, चाहिए। नहीं बाईपास करना है, वो करना है। क्योंकि एक स्टेज थी जब हम इसमें अटके थे, एक स्टेज थी जब ये सब हो रहा था और हमें ये चीजें बॉदर कर रही थी, फिर एक स्टेज आई जब मैंने आई टुक ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, देन आई कम आउट। और फिर थर्ड स्टेज में मैं पहुंचूंगा तब मुझे समझ में आएगा कि सब तो जस्ट खेल चल रहा था, मैं कहाँ फर्स्ट और सेकंड स्टेज में अटका था। तो बट वो थर्ड स्टेज में वहां तक पहुंचने के लिए ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज का खेल खेलना पड़ेगा। ओके। इसको नहीं खेला तो वो बाईपासिंग है। इसको नहीं खेल के सीधा थर्ड पे पहुंच गए कि तो टाइम क्यों वेस्ट करना, लेट्स ऑप्टिमाइज इट। जब यही करना है, जब यही पहुंचना है, तो फिर लेट्स ऑप्टिमाइज इट, लेट्स जस्ट रीच देयर। देन यू विल बी फूलिंग योरसेल्फ बिकॉज यू विल नॉट अंडरस्टैंड। फिर आप सिर्फ उसके बारे में बातें कर सकते हो, उसको फील कभी नहीं कर पाओगे उस चीज को, उस स्टेज को कभी फील नहीं कर पाओगे। क्योंकि वहां ये सिर्फ बातें कर सकते हो, ये बातें समझ में आ गई, मेंटली समझ में आ गई। तो इसलिए हम बता सकते हैं दुनिया के सामने, इसके बारे में बातें कर सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं, दूसरे बहुत अप्रिशिएट करेंगे इन सब चीजों को, आपकी बहुत वाह वाह करेंगे करेंगे। अंदर से आपको पता है कि मेरी लगी पड़ी है। ओके। सो अगर हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो ये जो आपने बोला अंदर से लगी पड़ी है, दैट वुड भी, वो अंदर से कामनेस आ जाएगी, वो क्वेश्चंस जो हमारे मन में इतना बिल्कुल, हर समय क्वेश्चन ही दिमाग में खत्म हो चलता जाए। रहता है, वो खत्म हो जाएंगे, शांति हो जाएगी एकदम। ओके। एंड और उसी से हमें पता चलेगा कि हम उस स्टेज पे एक्चुअल में पहुंचे हैं या फिर हमने बाईपास किया, राइट? Hello, Karma, I'm not able to hear you if you're saying anything.
फिर you reach that stage जहां पे क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, you will really be settled. Karma, I think we lost last couple of minutes. Karma, your voice was lost when I asked that कि उस चीज से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमने एक्सेप्टेंस आई मीन एक्चुअल में हमने वो थर्ड लेवल अचीव किया है या फिर हमने बाईपास किया है जब हमारा इंटरनल डायलॉग खत्म हो जाएगा. उसके बाद आपने जो कुछ भी बोला वो ना लॉस्ट हो गया. So I was saying कि one of my masters, he constantly say this thing that questions arise in an unsettled mind. Okay. Now इसको अगर हम ये समझ लें कि अच्छा तो अब मतलब कि अब मैं ना क्वेश्चन पूछने बंद कर देता हूं ताकि then that means I have settled mind. That is spiritual bypassing. क्योंकि क्वेश्चंस तो आ रहे अंदर से तो बहुत खलबली मची हुई है, अब मैं पूछ नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे किसी ने बता दिया है कि क्वेश्चंस पूछने का मतलब होता है कि आई हैव अनसेटल्ड माइंड. अब आई डोंट वांट टू प्रोजेक्ट कि आई हैव अनसेटल्ड माइंड, तो मैं क्वेश्चंस पूछने बंद कर देता हूं. तो ये ऊपर ऊपर से तो हम दिखा रहे, अंदर से तो बहुत खलबली मची हुई है. तो आई एम सेइंग कि पूछ लो, पूछ के अपनी चूल निकाल लो और reach that stage where mind gets settled, because when mind gets settled it will not create questions. It's not the other way around कि मैं क्वेश्चंस पूछने बंद कर दूं तो माइंड सेटल हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है. क्वेश्चंस पूछने बंद करोगे तो माइंड सेटल नहीं होगा, माइंड अंदर से बहुत उंगली करता रहेगा. True. Got it. This is the reason why people are not able to sit in meditation, क्योंकि उनको कोई बता देता है कि ऐसा करना. अंदर से माइंड बहुत उंगली करे जा रहा है, बट हम मेडिटेशन में बट हो ही नहीं पा रहा है, बैठ ही नहीं पा रहे क्योंकि इतने क्वेश्चंस हैं दिमाग में. तो पूछ लो, गेट इट रिजॉल्व. सो ट्राई एंड रीच द पॉइंट. The best approach I can give you all in this thing is ask questions to reach a point where the question starts dropping. Don't ask questions to get answers, क्योंकि आपको एक आंसर मिलेगा, आपके 10 क्वेश्चन उसमें और खड़े हो जाएंगे. तो जब आपको कोई क्वेश्चन का आंसर मिलता है ना, उस आंसर को ना इंप्लीमेंट कर लो. When you implement it, when you start living it, तो आपको समझ में आएगा कि आगे के जो 10 क्वेश्चन आ रहे थे ना, व्हाट इफ दिस, व्हाट इफ दैट, अपने आप ड्रॉप होने लगेंगे. तो माइंड विल स्टार्ट सेटलिंग व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन. जब तक डिस्कशन मोड में रहोगे ना, माइंड विल नेवर सेटल. So what kind of questions do we need to put on? What would be the viewpoint from which we need to? Sorry, your voice is not very clear. Are you saying something, Nitesh? Your voice. Huh. So I was saying, what kind of questions we need to put up? Any kind of questions, doesn't matter. There is no such thing as what kind of questions. Any question you put up, when you get an answer, you implement the answer. So focus more on implementation and transformation, not on just collecting information. We keep going in this mode of collecting information and all that. उसमें क्या होता है कि we keep stuck in the discussion mode. So as soon as you have a problem that you have discussed and someone has given you a way forward or a direction or a pointer, implement it. Because the moment you will implement it, you will see आगे के 10 questions अपने आप चलेगा. Perfect. So get in the mode of experimenting. Get in the mode of Be curious and yes, first be curious and resolve it. Yes, be curious. There is no problem in being curious. But take action.
विदाउट टेकिंग एक्शन क्वेश्चन जाने वाले नहीं आते. So, All right. Tejas, you have your hand up for some time. You want to ask? Yeah, Karma. So, Sorry, Nitesh, your question is it done? Sorry, yes, yes. Thank you, Akama. okay, no problem. Thanks. Yes, Tejas, go ahead. so sometimes I feel that some problem occur or something happen, right? Whenever, and I feel that okay, अब इसका आगे कुछ रिएक्शन या उस पे रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं है. Not even to resolve that thing. And I just not kind of ignore but say कि हाँ ऐसा ही है. So like is that a spiritual bypassing? And I just go on to heal myself, yeah, whatever I'm doing, and just go about my life, and maybe like in few hours or something I'll be completely okay. But then I don't go back to resolve that problem because I don't feel there is any point of putting more efforts or point of trying to resolve that thing because मेरे हाथ में जितना है वो मैं कर चुका हूँ already, and there is nothing else that I do नहीं, is going to make a difference. spiritual नहीं, वो नहीं है, because that is a good thing, क्योंकि we all need to be realistic कि what we can solve and what we can't solve, what is in our control, what is in our influence. Knowing कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो तो practical है, वो तो it's good to know that. Spiritual bypassing is कि जब मैं देख ही नहीं रहा हूँ, मुझे देखना ही नहीं, मतलब वो तो वहां तक बात पहुंची ही नहीं कि मेरे कंट्रोल में है, मेरे इन्फ्लुएंस में है, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, मुझे तो देखना ही नहीं है, मुझे तो उसके बारे में बात ही नहीं करनी. दैट इज बाईपासिंग. बट इफ यू हैव चेक्ड इट and you have realized that this is not in my control and influence, this is something I have no control over, and then you're retreating, वो तो practically है. बट अगर मैंने उसको चेक ही नहीं किया कि वो मेरे कंट्रोल में था भी, क्या मैं कुछ कर सकता था, क्या मैं यहाँ पे देयर वाज समथिंग आई नीडेड टू डू, एनीथिंग लाइक आई नीडेड टू टेक रिस्पांसिबिलिटी. मेरे को तो बात ही नहीं करनी है उसके बारे में, मेरे को देखना ही नहीं है उस तरफ. वो है बाईपास. Does that make sense, Tejas? Yes, Aparma, I think I can differentiate between how I used to do that bypassing probably some time ago, and now it's kind of a deliberate decision. हाँ, bypassing is more to do with my stuff. Bypassing is not about others. See, there are a lot of things that others should do, others should behave in a certain way, and all that. उस पे तो हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं ना. Right. Spiritual bypassing is a concept which applies to me. जो मुझे अपने ट्रिगर्स देखने थे, मुझे अपने ऊपर काम करना था, मुझे ये करना था, मुझे तो वो देखना ही नहीं, मुझे तो करना ही नहीं. That is bypassing. अगर मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ and I am now seeing कि कहाँ मेरे को कुछ करना है, कहाँ मेरे को कुछ नहीं करना है, and I have made a conscious decision about it, that's not bypassing. That's just honoring कि ये मेरी लिमिट है, बस आ गई, मेरे को जितना कर सकता था मैंने करा, this is I reached the boundary. अब there's nothing I can do from here. So अपने खुद की ओनरशिप और रिस्पॉन्स, अपने खुद की जो हमारी जो शिट है उसकी ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. जो लोग वो भी नहीं लेते हैं, दैट इज बाईपासिंग. Okay, like we are not feeling good, but उसको suppress करने के लिए we just do some activity जो temporary pleasure देती है या let's say you have a toxic partner who's making you, who's triggering you and all that all the time. But instead of seeing your trick, अब ये तो ठीक है कि वो है, वो तो जैसा है वैसा है, वो तो जो बोल रहे हैं कर रहे हैं, वो तो जो कर रहे हैं, ठीक है, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. लेकिन उसकी बातों से मेरे को परेशानी हो रही है, मेरे को वो भी नहीं देखना. मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे बस पॉजिटिविटी में ही रहना. नहीं कुछ नहीं हो रहा, ऑल गुड ऑल दैट. सो वो बस वो देखना. सो थिंग्स आर ट्रिगरिंग मी,
मेरी चेयर में कांटे हैं, मैं उसको कुछ कर ही नहीं रहा, दैट इज बाईपासिंग। जब मैंने अपना कर लिया और दूसरा फिर भी वैसा ही है जैसा है, that is where I reach the limit now. I don't have control over other people's behavior and other people's attitude. Right. So I can't do anything about that. That is how we set healthy boundaries with people. And if there is a spiritual bypass, there will be some things at the back of the mind all the time, right? Even if it is positive on the surface, but बिल्कुल पीछे वो बिल्कुल चलता रहेगा. बिल्कुल वो चलता रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। These are the people who, वही वो जो हम we meet these people, they come, मैं 7 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं 15 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, जब तक मेडिटेशन कर रहे हैं बढ़िया। और उनका ना कांस्टेंट एक डायलॉग यही रहता है कि सब बढ़िया है, जब तक ये इंसान मेरे से बात नहीं करता तब तक मेरे को कोई ट्रिगरिंग नहीं होती है। तो वही तो था वही तो Right. था। तो दैट इज द थिंग। तो वो बात कर रहा है तो मेरे को ट्रिगरिंग हो रही है, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। अरे तो वो एवरीथिंग वाज फाइन ऑलरेडी, तो वो तो आपके मेडिटेशन करने से पहले भी एवरीथिंग वाज फाइन दैट वे। Right. And something similar will come in the future. अगर ये नहीं तो और कुछ अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो then it will trigger again. करेक्ट करेक्ट। कोई और आ जाएगा, वो चला जाएगा, वो इंसान, आप उससे मूव ऑन हो जाओगे तो कोई और आ जाएगा आपका बटन दबाने के लिए, क्योंकि बटन तो अभी भी है, उसका तो आपने कुछ किया नहीं है। So just feeling like, you know, this is not fun or not something that I want versus actually getting triggered, that can be a differentiation between whether we are bypassing or not. Exactly. If I'm taking ownership of my own triggers and I'm working on myself, then that is not bypassing. वो कर लिया, वो करने के बाद अभी भी दुनिया में स्टूपिड और इडियट लोगों की कमी तो नहीं है, वो तो वही रहेंगे। Yeah. तो वैसा है कि घर में कूड़ा पड़ा है, घर एकदम गंदा है, महक रहा है गंदगी से एंड ऑल दैट, और मेरे को वो साफ करने की वजह नहीं महक रहा, मैं अगरबत्ती जलाए जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, बट मैं साफ नहीं कर रहा हूँ। मैं अगरबत्ती जला के ये करके परफ्यूम छिड़क के मैं उसको वो करे जा रहा हूँ, बट मैं साफ नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग ओनरशिप कि इसको साफ कर दूं ताकि ये अगरबत्ती जलाने की जरूरत ही ना पड़े, ये परफ्यूम छिड़कने की जरूरत ही ना पड़े। मेरे को वो नहीं करना है, मेरे को बस ऊपर ऊपर से और जैसे ही कोई और आके गंदगी डाल के जाता है फिर मेरे को ट्रिगरिंग हो जाती है, और फिर डाल गया, अब मेरे को एक अगरबत्ती और जलानी पड़ेगी। Right. Absolutely. Thank you, Karma, that answer. Prerna, your hand is still up. You have more questions or वो पहले से? Yeah, I mean, आज के मतलब सेशन के बाद I just feel that ये जो spiritual bypassing है, it's so सूक्ष्म, it's so subtle कि in the process of doing it, it does make us feel very superior. It does make us feel very superior Yes, to yes, others yes. who are Yes, इसको ही also spiritual facing. ego बोलते हैं। हाँ, Yeah, exactly, इसी को spiritual ego बोलते हैं। Correct, yes, बहुत very very good superiority, point. बहुत ये बहुत superiority. ही सटल है, बहुत सटल है, और जो कर रहे होते हैं उनको भी समझ नहीं आता। हाँ, and it makes me feel very superior to the other people who I know who are also facing the same problem. ऐसा तो नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मेरे को ही है, जो भी प्रॉब्लम्स है, I know other people who are very well suffering the same problem, but by doing whatever I am doing, I feel superior कि although we both are having the same problem, I am dealing with it in a much better way, in a much mature way. हाँ हाँ हाँ, yeah, that is what we call spiritual ego as well. हाँ. See, when But हम Karma, to add in this thing, I mean, you can answer completely. Like what Prerna is trying to say, I have also felt that कि अगर हम वो चीज feel नहीं करेंगे कि okay, I am doing or handling or I am working on myself and that person is still with traumas and उसको तो अपने ऊपर awareness ही नहीं है, तो
वो एक कहीं ना कहीं वो आ तो जाता ही अपने आप ही कि हाँ हमें एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो है और इन्हें तो नॉलेज ही नहीं है, तो ये बेचारे क्या एक्शन करेंगे। और मतलब वो एक मतलब ईगो नहीं है बट एक कैसे वो हो सकता है हम उसे ईगो बोले, लेकिन क्या वो चीज गलत है बोलना सोचना, क्योंकि उसी उसी बेसिस पे तो हम ये आगे डिसाइड कर रहे हैं ना कि ओके अगर जैसे मेरी अपने मदर बूढ़ी है और मैं अगर अपने मम्मी के साथ का काम देखूं तो मैं यही तो बोलूंगी ना कि ओके मेरी मम्मी को विजडम ही नहीं थी उस लेवल की, तो इस वजह से वो जैसा जैसा उनका बिहेवियर था वो था और इस वजह से उनको इतनी समझ में नहीं है, लेकिन मुझे वो विजडम है, इस वजह से मैं वो चीजें प्रोसेस कर पा रही हूँ कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया या क्यों नहीं किया। तो वो एक लेवल नहीं, तो रहेगा ना। वो कंपैशन है, नहीं वो कंपैशन है। वो प्रेरणा इज सेइंग कि जब मैं ये मानने लगता हूँ कि मैं सुपीरियर हूँ, जब तुम ये मानने लगो कि मैं अपनी मदर से सुपीरियर हूँ, अच्छा ओके। दैट दैट इज व्हाट वी कॉल स्पिरिचुअल ईगो। बट जहां पे तुम्हारी वो अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट शी इज डूइंग इज बिकॉज शी हैज हर ओन वुंड्स एंड शी डिडंट, वो तो कंपैशन है। उनको इंफीरियर या अपने आप को सुपीरियर तो नहीं मान रही हो ना। यू आर जस्ट सेइंग कि ये दो अलग अलग सिचुएशंस हैं, मुझे समझ में आ गया, उनको नहीं आया है, शी स्टिल स्टक। लेकिन अगर ऐसा आ रहा है अरे बेचारी ये है ना, मतलब फिर हमें ऐसे लगता है ना कि हम सुपीरियर हैं किसी से, हमें कुछ पता चल गया है उनको नहीं पता चला है, वो कितनी बेचारी हैं, कितना ये है वो है। दैट इज स्पिरिचुअल ईगो दैट वी आर टॉकिंग। Okay, 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 got it. Akarma, I also wanted to know that, where does all this things like affirmation and all fall in? क्योंकि affirmations बहुत सारे होते हैं कि it really has a direct impact on our subconscious mind. So whenever an event happens and then we try to work ourselves out of it through affirmations, will those affirmations, are we not attracting those vibrations into us and it becomes a part of our subconscious wiring, and then we heal ourselves eventually? या वो भी एक spiritual bypassing ही है using affirmations? No, it's not spiritual bypassing. If you are working on your triggers, if you are working on yourself, then good. But अगर सिर्फ affirmations ही करने की कोशिश कर रहे हो, then it is bypassing. Yes. So any practice you are doing, meditation, affirmation, subliminals, any of these practices that you are doing, which is only about positivity और negativity को देखना ही नहीं है, negativity पे काम ही नहीं करना है, that is bypassing. अगर दोनों कर रहे हो तो इट्स फाइन, दैट्स गुड, दैट्स अ हेल्दी प्रैक्टिस। नेगेटिविटी को भी खत्म कर रहे हैं और पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हैं, दैट्स अ बैलेंस्ड अप्रोच, दैट इज व्हाट वी आर रिकमेंडिंग आल्सो। Okay, thank you. And I just have one last question. When Anamika mentioned about labeling emotions as good or bad, so I have one tendency that I always want to give understand what is that emotion that I'm experiencing. Even when somebody says something to me, so I ask myself, okay, what are you feeling right now? Are you feeling humiliated? Are you feeling singled out? Are you just feeling disappointed? Or are you actually hungry? Are you tired? What is it? So I actually try to identify that emotion. So am I labeling it in that process? लेबलिंग मतलब क्या? लेबलिंग Anamika, कैसे यूज कर रहे हो? Yes, no, Anamika, this practice that you're talking about is a very good practice, right? That is bringing understanding to the emotion. So giving it kind of a name. So we also say people that you go deeper, you see what you're feeling and give it a name, which is good. Labeling in the sense I was saying that you're labeling it as good or bad. That जैसे कि बहुत सारे लोगों से हम सुनते हैं कि अरे, मतलब हमें भी पर्सनली बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, अरे आप तो स्पिरिचुअल हो, हाउ कैन यू गेट एंग्री, राइट? देखा क्या, लाइक माय फ्रेंड जस्ट टू टीज मी, दे वुड बी लाइक कि ओहो हो, तू तो इतनी स्पिरिचुअल है, तुझे क्यों इस बात पे गुस्सा आ रहा है? तुझे तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, अरे तुम बात ही ऐसी कर रहे हो तो गुस्सा तो आएगा ही। So in that way I'm saying कि that labeling emotions are as good or bad, कि happiness अच्छी हो गई और anger बुरा हो गया,
राइट किसी भी चीज का एक्सेप्टेंस अच्छा हो गया और किसी भी चीज के लिए अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो वो बुरा हो गया. So in that way, labeling emotions, good and in the way of good and bad. So we'll reject the bad, we will accept the good, like that. Right. Thank you so much. Cool. So I think it's time to wrap up now. I think that most people have dropped out, but I think it was a good conversation today, and we should conclude it now. Thank you, everyone. Thank you for joining, and we will see you in next call. Thank you so much, guys, for joining. Thank you, everyone. Wonderful Thank you, conversation. Karma, Thanks, Anamika. thanks everyone. Thank you. Yes, Have a great bye. conversation. Thank you. Bye bye. Bye.